So we are discussing the seventh cranial nerve, that is the facial nerve. Before we start any cranial nerve, teaching of any cranial nerve, we should understand what is functional components. You know what is functional components? Yes or no? Yes and no. N-O no. K-N-O. Which no you are talking about? Huh? So functional components, in general, I'll just give you idea. There are efferent components and afferent components. Whenever a cranial nerve supplies muscles developing from branchial arches, it gets a component called a special visceral efferent. That is for branchial arch muscles. That component is there in facial nerve, special visceral efferent. Okay? Because it supplies the muscles of face, facial expression, which are developed from the second pharyngeal arch, and the fibers from which come from facial nerve nucleus, which is in lower pons. In lower pons. Facial nerve nucleus in lower pons. Special visceral efferent. Then is general visceral efferent. General visceral efferent. General visceral efferent is whenever a cranial nerve has a component general visceral efferent, we are talking about parasympathetic outflow. Parasympathetic outflow. So the parasympathetic outflow means it supplies the glands and iris. Parasympathetic outflow is craniosacral. It is craniosacral. So the cranial outflow goes via 3, 5, 7, 9, these cranial nerves. Okay? 7, 9, 10. Okay? Not 5, 3, 7, 9, 10. 3, 7, 9, 10. This is by 5, 7, 9, 10. Okay? So this is parasympathetic. So cranial nerve 7 supplies lacrimal gland. It supplies submandibular gland. It supplies sublingual gland. And for lacrimal gland there is lacrimatory nucleus. For submandibular and sublingual gland there is superior salivatory nucleus. There is superior salivatory nucleus. Okay? For facial nerve, the components are very easy to remember. Special visceral, general visceral, afferent and efferent. That's how you remember. Special visceral, general visceral, afferent and efferent. So there will be special visceral afferent also. This special visceral afferent is for taste in. Okay? So this is for taste of anterior 2/3 of tongue. And fibers come from nucleus of tractus solitorius. Nucleus of tractus solitorius. Nucleus of tractus solitorius. General visceral
afferent. General visceral afferent. General visceral afferent is for again sensations from these glands. You know, afferent sensation from the glands it supplies. It is for the proprioception of the muscle it supplies. Okay, so this also goes to nucleus of tractus solitarius. Proprioception of all head, neck, face muscle goes to mesencephalic nucleus of trigeminal. Okay, there is fifth component, general somatic afferent. What is general somatic afferent? General somatic afferent is for the ये proprioception यहाँ पे नहीं लिखते, इधर लिखते हैं. जनरल सोमैटिक एफरेंट में लिखेंगे. कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा है. आपके पास किसी के पास टेक्स्ट बुक है आपका? जनरल सोमैटिक एफरेंट is for skin around the ear. ये कुछ टेक्स्ट बुक्स में है, आपके इसमें ये नहीं दिया है. स्किन अराउंड द ईयर. स्किन का सेंसेशन comes from spinal nucleus of trigeminal. Spinal nucleus of trigeminal. Spinal nucleus of trigeminal. Okay. So basically, when we talk about the functional components of the facial nerve, you have to remember दो स्पेशल है. स्पेशल विसरल एफरेंट और मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. स्पेशल विसरल एफरेंट फॉर टेस्ट ऑफ एंटीरियर. जनरल विसरल एफरेंट इज फॉर ग्लैंड्स, lacrimatory glands, salivatory. Okay, and जनरल सोमैटिक एफरेंट इज फॉर स्किन अराउंड द ईयर. कुछ बुक्स में जनरल विसरल एफरेंट में लिखा है for the sensations from afferent sensations from the gland. So are the functional components clear to you? Okay. Now let us see the course of the facial nerve. For that, what I am going to tell you first is how to write course of any cranial nerve. Okay? We start first with the functional components. We start first with the functional components. Then we talk about where are the nuclei located, from where the fibers will start. After that, you have to write intranuclear course. Intranuclear course. Intranuclear course. Okay? After intranuclear course, then you write, मतलब वो ब्रेन स्टेम के अंदर ही घूमते हैं. तो कहाँ पे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, वो आपको बताना है. After intranuclear course, we talk about appearance on brainstem. Appearance on brainstem. कि brainstem पे कहाँ पे appear होता है. Cranial nerve, where does it appear on the brainstem? After that, intracranial course. After that is intracranial course.
कि स्कल के अंदर इसका कोर्स कैसे है, इंट्राक्रेनियल कोर्स. देन द एग्जिट फोरामेन. Which foramen does it exit the skull? Which foramen does it exit the skull? And then after coming out of the skull, you talk about extracranial course. Extracranial course. And then you talk about branches. Then you talk about which branches are there. Okay? जरासा झूम करून घ्या. So start. 1, 2, 3. So we are discussing how to write course of a cranial nerve. Start with functional component. Even when you are writing functional component, you have to make a chart. Functional component. What is the name of the component? What is the nucleus from where the fibers will arise, and what is the area of supply? Like for example, special, visceral, afferent in case of facial nerve. Nucleus is nucleus of tractus solitarius, area of supply is anterior 2/3 of tongue. So there has to be chart, has to be made, functional component. Second point, which all nuclei and location of that nuclei, which level the nuclei are, upper pons, lower pons, whatever, medullus, midbrain. Then intranuclear course means inside the brainstem how the fibers are moving around. Then appearance of brainstem, where does it appear? At the junction of pons and medulla, okay, wherever. Intracranial course, after coming out of brainstem, how does it move around inside the skull? Intracranial course. Then exit foramen, from which foramen does this cranial nerve come out? Then extracranial course. Okay, what is the course of branches it gives? Okay, now how is the course outside the skull? Then the branches it gives, and lastly applied anatomy. Applied anatomy, you have to write mainly 2 points. One is how to test this nerve, whether it is positive, whether it is worst, paralyzed, damaged or not. And secondly, why and how. Why and how does this tongue gets damaged? And thirdly, what are the effects of the paralysis? What are the effects of paralysis? Okay, so these are the headings under which a cranial nerve has to be described. Thank you. Sachin. ते 2-3 ऍड केले ना. So with this background, now let us start describing the facial nerve. First point क्या है? Functional component we have discussed already. I made a table for you. So now we talk about the nuclei. Where is the nucleus? You are aware of the brainstem? Brainstem में हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, brainstem. This is the crus, this is the pons, this is the medulla, और यहाँ पे 6, ये साइड का 6, ये साइड का 6, 7, 7, 8, 7, 6, 7, 8. 6, 7, 8, they arise from the junction of pons and medulla. If it is arising from the junction of pons and medulla, that means its nucleus is at the level of lower pons. जैसे fifth जो है ना, fifth nerve यहाँ पे, अब तो उसका nucleus is at upper pons. 6, 7, 8 का nucleus will be at lower pons. आपको न्यूरोएनाटॉमी हुआ नहीं ना अभी तक, न्यूरोएनाटॉमी, सो वो जब आपको सिखाएंगे तो भी आपको सेक्शंस निकाल के दिखाएंगे. यही ब्रेनस्टेम पीछे के बाजू से जब हम देखते हैं तो दिस इज सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? देन कॉर्पोरा कॉर्डरी जमीना अपन बोलते हैं ना,
and then here this is the back side of the brainstem what I have drawn, back side of the brainstem. यहाँ पे ऐसा एक फेशियल कॉलिक्यूलस दिखता है, फेशियल कॉलिक्यूलस, फेशियल कॉलिक्यूलस। तो आपको लगता है कि यहाँ पे ही हमारा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस रहेगा, वैसा नहीं है। If you take a section at this level, so the pons appears like this from behind. This is anterior aspect, ये anterior aspect है, ये posterior aspect है। ये facial colliculus के below 6 nerve होती है, 6 nerve, और 7th nerve nucleus is here. 7th nerve nucleus is here. Fibers go like this and come out at the junction of pons and medulla. And 6 nerve के fibers they come out like this. So 6 nerve, 7 nerve. 6 nerve is medial. 8th nerve nucleus is here, here. So 8th nerve comes out like this. 6, 7, 8. Okay. So what is deep to facial colliculus? ये facial colliculus is 7th nerve के fibers going around the 6th nerve. 7th nerve के fibers going around the 6th nerve. ऐसे बोलते हैं कि 7th nerve originally यहाँ पे था, वैसा ही 6th nerve के around गया. That is called as neurobiotaxis. Attraction between the nuclei. उसको neurobiotaxis बोलते हैं. Okay. So 7th nerve was originally here. It went like this. So it fiber go around the 6th nerve. तो ये facial colliculus जो FC लिखा है. There are 2 facial colliculi. What is deep to facial colliculus? 6th nerve nucleus and 7th nerve fibers going around it. And then the fibers. So आप intranuclear course कैसा लिखोगे देखो. Fibers go posteriorly, go around the 6th nerve, and then come out anteriorly. Intranuclear course करता है क्या तुला? तू हाँ तू हाँ समझता है का नहीं समझता? हाँ आवाज दूसरी जगह से आ रही है। So 7th nerve ऐसे है, 6th nerve ऐसे है. Okay, so this is 7. So I say that nucleus is at the level of lower pons. Okay, facial nerve nucleus. Then intranuclear course will be fibers go posteriorly, they form facial colliculus, and then they come anteriorly. नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर इसके डिस्क्रिप्शन में? अपीयरेंस ऑफ ब्रेनस्टेम. यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ पे अपीयरेंस ऑफ ब्रेनस्टेम? अपीयर्स एट जंक्शन ऑफ बराबर है ना, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है. सो जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला. अभी एनाटॉमी में ना थोड़ा मसाला डालना पड़ता है. आप खाली लिखोगे इट कम्स आउट एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला. आपके सब्जी में कैसा मसाला लगता है आपको? ब्लैंड सब्जी दे दिया विदाउट सॉल्ट, जो महात्मा गांधी खाते थे, बिकॉज कस्तूरबा गांधी को ब्लड प्रेशर का तकलीफ था, तो उसको डॉक्टर ने बोला सॉल्ट मत खाओ. तो वो बोली मैंने ऐसा मेरे को नहीं जमेगा विदाउट सॉल्ट. तो महात्मा गांधी ने बोला मैं भी नहीं खाता चलो, तो उन्होंने भी बंद किया खाने को. तो विदाउट सॉल्ट, एक दिन आपको विदाउट सॉल्ट कुछ दिया तो आप कैसा करते हैं घर में तमाशा? आपको बोलता विदाउट सॉस भी नहीं जमता है, सॉल्ट छोड़ दो. मेरे को एक चीज समझता नहीं कि उतना सॉल्ट छोड़ा फिर वो दंडी मार्च पे क्यों गए? उधर जाके उधर जाके सॉल्ट उठाया और बाकी लोगों के लिए ऐसा आदमी होना चाहिए. बाकी लोगों के लिए सॉल्ट उठाया, फिर अपने लिए सॉल्ट छोड़ दिया. तो वो सॉल्ट, ब्रिटिश ने वो सॉल्ट पे ये किया था. तो सॉल्ट पे क्यों पहुंचे हम लोग? मसाला, मसाला, हाँ आपको मसाला ऐड करना है.
तो मसाला ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना है, जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला बिटवीन द 6th and 8th nerve. ओके, और मसाला ऐड करो. चलो ये एक लाइन हो गया. बिटवीन 6th and 8th, and there are 2 roots. यहाँ पे देखो मैंने 7 निकाला है और उसके बाजू में एक छोटा सा निकाला है. NS लिखता हूँ इधर, NI 7 को लिखता हूँ M. 7 के ऊपर मैंने M लिखा है. ये क्या लिखा है, M क्यों लिखा है? So there are 2 roots. One is motor root and another is NI. NI is sensory. Kulal, Prutha. Now, Prutha म्हणजे काय ग? Best in everything. Anybody? संस्कृत शिकलेली कोणी? पृथ्वीचा पण एक शब्द आहे पृथा आणि कुंतीचं दुसरं नाव पृथक. अपने अपने नाम के बारे में मालूम होना चाहिए सबको, क्यों लिखा है. Prutha, the word comes from Prutha dhatu. Prutha means expands. The earth expands to accommodate all of us. Okay, so that's what the meaning is. पृथक्करण शब्द, एक्सपांशन. पृथक्करण जो मराठी ज्यांनी शिकले, पृथक्करण इज एक्सपांशन. यू एक्सपांड दिस. ओके, हर तुम्हाला हेवी होता असेल ना, वो आपको इससे फेशियल ना इजी लगता रहेगा. पृथा. सो यू सेड सेंसरी, नर्वस इंटरमीडियट, बट मैंने तो नर्वस इंटरमीडियट, इसको मोटर बोला, इसको मैंने सेंसरी नहीं बोला. इट इज सेंसरी प्लस सिक्रेटोमोटर. सेंसरी प्लस सिक्रेटोमोटर. So there are 2 roots by which it is attached. So you should not say that 7th nerve is attached at the junction of pons and medulla between the 6 and 8. तो ये 6 है मीडियली, ये 8 है, बट इधर फेशियल नर्व का मोटर रूट है और पृथा और क्या है, सेंसरी नहीं, एक्सपांड. पृथा मींस एक्सपांड, पृथक्करण. There is nervous intermediates which is sensory plus secretomotor. मतलब जो ग्लैंड्स के सारे फाइबर्स है वो कहाँ से जाएंगे, नर्वस इंटरमीडिएट्स में, और सेंसरी फाइबर्स कहाँ से जाएंगे, नर्वस इंटरमीडिएट. Is it clear? So there are 2 roots. Then we are talking about the इंट्रा. उसके बाद कौन सा कोर्स आता है, इंट्राक्रेनियल. स्कल आपको पढ़ाया गया है. स्कल हेलो, बोलना बड़ा. So what is the next point? Intracranial. So brainstem से जब वो बाहर निकलते हैं, they go laterally and they enter internal acoustic meatus. ये external acoustic meatus यहाँ पे. Under petrous temporal के posteriorly there is internal acoustic meatus. So it enters internal acoustic meatus. It enters internal acoustic meatus. So देखिए यहाँ पे, so this is the internal acoustic meatus. हाँ, this is internal acoustic meatus, and 8th nerve enters like this. 8th nerve, और वो सीधी चली जाती है. 7th nerve is here. 7th nerve is here. This is 7th nerve, और ये क्या है,
ये क्या है? Seventh nerve, motor root and nerve. So in the internal acoustic meatus, they unite. तब तक the two roots are separate. So what are the contents of the internal acoustic meatus? Seventh nerve, eighth nerve and labyrinthine artery. तो इसका जब सेक्शन लेते हैं ना हम लोग, इसका जब सेक्शन लेते हैं, इसका जब सेक्शन लेते हैं, सॉरी एक मिनट, ब्लैक वाला मैंने स्टार्ट ब्लैक से किया था, वो किधर ब्लैक किया है मैं? So this is internal acoustic meatus. उसके अंदर कैसा दिखता है देखो, एट्थ नर्व, सेवेंथ नर्व का मोटर, नर्वस इंटरमीडियस, लैब्रिंथाइन वेसल्स के तो कॉर्नर में रहते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया बट एक्चुअली वो ऊपर वगैरह रहते हैं, हाँ, एंड लैब्रिंथाइन वेसल्स, एंड लैब्रिंथाइन वेसल्स लिख रहा हूँ, मतलब वहाँ पे वेन भी होता है, लैब्रिंथाइन आर्टरी एंड लैब्रिंथाइन वेन, तो आर्टरी भी है, वेन भी है, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंस, वो यहां से गया तो एट्थ नर्व आगे चला जाता है, ईयर है आगे, लैब्रिंथाइन आर्टरी, सॉरी मैं यहाँ पे दिखाना ही नहीं चाहिए, तो ऊपर ही दिखाता हूँ मैं, बट वहां पे जगह नहीं था, तो लैब्रिंथाइन आर्टरी एंड वेन यहाँ पे। नाउ सेवेंथ नर्व सडनली डिप्स इन, इट सडनली डिप्स इन अ canal, it goes into a canal which is called facial canal. It goes into a canal called as facial canal. S-shaped है, S-shaped. इसमें किस किस का नाम S से चालू होता है आपके यहाँ पे? हाथ ऊपर, क्या नाम है आपका? सांभवी, सानिया, सारा, सारा, साहित्य, अप्रैल का, श्रेष्ठ, समीरा, शुभश्री, श्रुति, खत्म नहीं हो रहा है क्या? पास ना अभी, बहुत हो गया अभी। वो अपने स्कूल्स में कैसा वो शाह चालू रहते, एक शाह, दूसरा शाह, तीसरा शाह, पटेल, पाटिल, पाटिल, पाटिल 1, पाटिल 2, पाटिल 3, पाटिल 4, चौधरी, देसाई, क्या होगा? क्या होगा? मेरे पे हंस रहे, पीछे से कुछ किया किसी ने, संभवी ना, क्या होगा, क्यों हंस रहे? किसी देसाई का याद आ गया? सो ये ऐसे, सो कोर्स में हमने क्या बोला? एंटर्स इंटरनल acoustic meatus. From there, what does it enter? शुभश्री को ही तो। From where does it enter? Internal acoustic meatus से it enters facial canal. It enters facial canal, which is S-shaped. तुम लोग तो लिखोगे which is S-shaped. And with S starts my name also. ऐसे लिखोगे तो आपको आपका रिजल्ट withheld हो जाएगा. Which is S-shaped, हाँ? S-shaped, हाँ? Then it next क्या point है अपना? हाँ? Exit foramen. So it exits from stylomastoid foramen. Exits from stylomastoid foramen. तो आ गई, बाहर आ गई, ओके? अभी क्या है उसके बाद? उसके बाद क्या है? Extracranial cord. So after coming out of the facial canal, it enters the parotid gland. It enters the parotid gland, where it divides into its terminal 5 branches. Where it divides into its terminal 5 branches. Where it divides into its terminal 5 branches.
extracranial course, where it divides into its terminal 5 branches. Okay? टर्मिनल 5 ब्रांचेस के नाम मालूम है आपको? नहीं? Okay. So facial canal, then what should I write over here? Please guide me, Sara. Facial canal में से फिर आगे क्या आएगा? Comes out of stylomastoid, then enters extracranial cord, enters parotid gland. Okay, and there it divides into terminal 5 branches. Divides into terminal 5 branches. Okay, आपका टर्मिनल हो गया ना? फर्स्ट टर्मिनल हुआ है ना? याद नहीं आ रहा है? 5 ब्रांचेस टर्मिनल क्या है देखो, ये ऐसे याद रखते हैं. 1 जो अंगूठा है आपका, दैट इज टेम्पोरल, zygomatic, buccal, marginal mandibular, mandibular नहीं बोलते हो, mandibular ना अलग है, marginal mandibular, and cervical going to the neck. Okay, temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, and cervical. Clear? 5 terminal branches. एग्जाम में एग्जामिनर के सामने ऐसा हाथ रख के बोलने का नहीं. हम लोग जैसे बोलते हैं ना, डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ द फेस. सर 1 सेकंड. एक मुंह में ये याद रखने के लिए आपको खाड़ करके ऐसा हाथ रख के एग्जाम में ये मत करो बस. दैट्स ऑल. नहीं, दैट्स नॉट ऑल. दैट्स नॉट ऑल. वो स्टाइलोमेस्टेड तो ब्रांचेस, अभी हम लोग ब्रांचेस लिखेंगे. ब्रांचेस में पहले क्या करो, इतना सा जगह छोड़ो, हाफ पेज, और नीचे के हाफ में ये 5 टर्मिनल ब्रांचेस लिखो. ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़कर एकदम पेज के नीचे वाली 5 टर्मिनल ब्रांच, 5 टर्मिनल ब्रांचेस, इतना लिखो. उसके नाम आप बाद में लिख दो, आपको तो मालूम है. मैं उल्टा जा रहा हूँ. इजी पहले 5 टर्मिनल ब्रांचेस इजी है. हाँ. Now coming out of the stylomastoid foramen, it gives 3 branches. It gives 3 branches. 1, posterior auricular nerve. Posterior auricular nerve. Posterior auricular nerve. Okay? Posterior auricular nerve. 2, now to stylohyoid. Stylohyoid muscle. That also develops from the second branchial arch. Facial nerve is the nerve of the second pharyngeal arch. Now to mylohyoid, which also supplies, it gives nerve to posterior belly of digastric. So 3 branches: posterior auricular, then now to stylohyoid, now to mylohyoid, which also supplies ये डाइगेस्ट्रिक है ना, ये ऊपर वाले ने खास हम लोग के लिए बनाया है, एनाटोमिस्ट के लिए, ताकि हम आपको एक क्वेश्चन पूछ सके.
उसका एंटीरियर बेली डेवलप्स फ्रॉम द फर्स्ट आर्च एंड इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व. उसका पोस्टीरियर बेली डेवलप्स फ्रॉम सेकंड आर्च एंड देयरफॉर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व. जबरदस्त है ना. खास एक एमसीक्यू के लिए, खास एक वाइवा क्वेश्चन के लिए. ओके, ये हम लोग के लिए बना है. हम लोग पूछते ही हर एग्जाम में डायगेस्ट्रिक पे 2 बेलीज अलग अलग नर्व्स. ओके, हो गया. नहीं नहीं हुआ है, नहीं हुआ. आपने ऊपर का स्पेस से भी और छोड़ा रखा है ना. तो क्या हो गया प्रथा, तू तो लिखी ही नहीं. मैंने क्या बोला? अच्छा, उधर बाद में लिखेंगे फुर्सत में. सो branches of facial nerve are divided into 3 parts. One is terminal, जो मैंने आपको पढ़ा है. Second is just after exit from stylomastoid foramen. बरोबर. Third are in facial canal. Third set is in facial canal. फेशियल कलर का है ना लंबाड़ा. तुझा नाम क्या है? हाँ, नाम का नाम क्या है? अंचल. क्या? सांगवा. आप हरियाणा से नहीं, मैं वाइवा लिया था तभी सबका वाइवा लिया था. कौन है, किधर से, क्या है. तो ऐसा क्यों है बाबा, क्या है, कब खत्म होगा ये? आपको लगा एग्जिट हो गया फोरामेन में से, टर्मिनल ब्रांचेस दे दिया तो खत्म. ऐसा नहीं है. 3 ब्रांचेस आर इन द फेशियल कनाल. उसमें से फर्स्ट ब्रांच इज ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. ये यहाँ पे ना, ये ऐसा फेशियल नर्व शार्प टर्न लेता है. शार्प टर्न इज कॉल्ड जेनु. और यहाँ पे होता है जेनिकुलेट गैंग्लियन. जेनिकुलेट गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, बट ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. तो हमने जो लैक्रिमल न्यूक्लियस बोला था ना, लैक्रिमल न्यूक्लियस, उसके फाइबर्स इसमें से निकल जाते हैं. हम लोग अब बाद में देखेंगे. ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. फिर नर्व टू स्टेपेडियस मसल. नर्व टू स्टेपेडियस. नर्व टू स्टेपेडियस कहाँ पे है? मिडल ईयर में. स्टेप्स है वहां पे. स्टेपेडियस क्या करता है? इट डैम्पन्स द अननेसेसरी नॉइज. अभी आप यहाँ पे बैठे, रास्ते पे आवाज हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? व्हीकल जा रहे हैं, आपको केवल मेरी और मेरी आवाज सुनाई दे रही. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? बिकॉज ऑफ स्टेपेडियस. वो स्टेपेडियस पैरालाइज हो जाएगा तो आपको हाइपर एक्यूसिस हो जाएगा. हाइपर एक्यूसिस. हाइपर एक्यूसिस मतलब ये पेन ऐसा गिरा ना तो आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा आपको. आपको जो कभी कभी आप स्टेशन पे खड़े रहते हैं और कोई लड़की हाई हील्स में टॉप 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 करके चल के जाते हैं ना बाजू से, देखा रहेगा ना आपने. आप शांति से खड़े, मेडिकल डेंटल स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स शूज में, और बाजू में सेंट जेवियर्स की लड़की आपकी कहते टॉप 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 टॉप. तो वो टॉप टॉप में आपको ऐसा सुनेगा. हाइपर एक्यूसिस. हाइपर एक्यूसिस. हाँ, ये नर्व डैमेज हो जाता है. बट मजा ऐसा आएगा कि यहाँ आप बैठे हो, हम एचओडी केबिन में डेंटल का पेपर सेट कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाई. You can just note all the questions. Third, फेशियल कनाल में कितने ब्रांचेस हैं? Third is chorda tympani. Third is chorda tympani. Chorda tympani. रुता ने ऐसा किया.
नहीं, पृथक्करण. What is पृथक्करण? So now I am expanding this. Greater petrosal supplies two glands and one taste of the palate, and two glands में one is lacrimal gland and two is glands of palate. Glands of palate. Lacrimal glands and glands of palate. Okay? Chorda tympani. इसका क्या था? Two glands and one taste. Chorda tympani also supplies two glands. 2G. आप लोग जन्म भी नहीं हुआ था ना, आपका 2G नेटवर्क था तभी. राउंड आप वो आप भी एक्सपीरियंस करते रहेंगे ना कभी कभी, या नहीं होता है आजकल नहीं होता है. बफरिंग कभी कभी एक आध बार होता है ना. हम लोग वो सुबह बफरिंग में रख देते थे, फिर शाम को वीडियो जाके देखते थे, वो धीरे 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 फिर हम स्लाइड करके देखते थे. तभी वो 2G नेटवर्क था. टू ग्लैंड्स, ये दोनों 2G है, ग्रेटर पेट्रोजल एंड. इसमें टू ग्लैंड्स कौन से है? SMG सब मैंडिबुलर ग्लैंड, SLG सब लिंगुअल ग्लैंड. SMG एंड SLG सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल. और एक टेस्ट, वो टेस्ट क्या है? हाँ बोलिए. So chorda tympani carries taste for anterior 2/3 of tongue. Taste for anterior 2/3 of tongue. Anterior 2/3 of tongue. Yes, last corner वाला बॉय खड़े रहो. क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हाँ? क्या नाम है? वेदांत. So वेदांत, chorda tympani कहाँ का टेस्ट? हाँ, बिकॉज तो सुन नहीं रहा था. नहीं, chorda tympani मैंने अभी बताया तो तू खोया हुआ था. नहीं, तू बाजू वाले को मत पूछ. बाजू वाले खड़े रहे, तू उसको टिप दे रहे. हाँ, खड़े रहे. क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, माधव. chorda tympani anterior 2/3. बाजू की लड़की. Which glands does chorda tympani supply? Submandibular and sublingual. Vedant. Which gland does greater petrosal supply beta? पैलेट में ग्लैंड्स होता है और वहां पे टेस्ट भी है. टेस्ट ऑफ पैलेट में टेस्ट मिलता है तुमको? मिलता है ना. जब हम तीखा खाते हैं तो क्या करते हैं? तो इट्स नॉट ओनली टंग. यू रियलाइज द टेस्ट इज देयर ऑल ओवर. वेदांत ध्यान रख. मैं समझ गया, तू खो गया था किधर. ओके. नहीं हुआ खत्म. हमने खाली बोला कि ये now let I just revise fast. So facial now basically gives 11 branches. 3 branches are given in facial canal. 3 branches are given immediately after coming out of stylomastoid foramen. And 5 branches are given in. तो आपको ये 5 ब्रांचेस का तो टेंशन लेना ही नहीं है. ये तो 5 इन पैरोटिड ग्लैंड.
ये 3 ब्रांचेस भी फालतू है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, स्टाइलोहाइड, माइलोहाइड। मेन ये 3 बेकार है, ग्रेटर पेट्रोजल, स्टेपेडियस एंड। अभी लीजन्स देखो फेशियल नर्व के, लीजन्स, लीजन नंबर 2, इसको मैं 2 क्यों बोलता हूं? 1 ना न्यूक्लियस के अबव होता है। ओके, जहां पे हमारा न्यूक्लियस है, यहां से न्यूक्लियस पे आ रहे, न्यूक्लियस से फाइबर जा रहे। ये न्यूक्लियस भी ऐसा होता है ना, न्यूक्लियस एक अपर हाफ के लिए, एक लोअर हाफ के लिए, फेस के। ओके, ये न्यूक्लियस है और ये सेरेब्रम है। सो नॉर्मली ऑपोजिट साइड सेरेब्रम से कनेक्टेड है, बट अपर हाफ ऑफ फेस इज आल्सो कनेक्टेड टू सेम साइड सेरेब्रम। ओके, so number 1 lesion is here. Number 1 lesion is here. This is facial nerve nucleus. Number 1 lesion is above the nucleus. This is called as UMN, upper motor neuron lesion. वो जब होता है तो ये सब सप्लाई सब बराबर है, लेकिन लोअर हाफ इज कंट्रोल्ड बाय ऑपोजिट, but upper half will escape paralysis because it also is connected to the same side. मतलब facial nerve, ये साइड की मेरी facial nerve है, वो ये साइड के cerebrum, ये साइड के cerebrum से भी connected है, upper half of face. Lower half of face खाली opposite से connected. So when there is upper motor neuron paralysis, यहाँ पे lower 1/4 of the face, lower 1/4 of the face will be gone. Number 1. बराबर? Why upper 1/4 escapes paralysis? Huh? Because it is connected to both cerebrum. When we talk upper motor means nerve को कुछ issue नहीं है, वो nerve से cerebrum को issue है, वो fibers का है। Number 2 lesion, यहाँ पे कट हो गया, so this is number 1, this is number 2, number 3, sorry, number 3, number 4, number 5. Let's start with number 5. नंबर 5 पे गया तो फेशियल फुल हाफ ऑफ द फेस इज गॉन, दैट इज कॉल्ड एज बेल्स पाल्सी. मोस्ट कॉमनेस्ट इज बेल्स पाल्सी. नंबर 4 पे हुआ तो हाफ ऑफ फेस इज पैरालाइज्ड अलोंग विद नो टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग. मैगडी में जाके वगैरह कुछ फायदा नहीं, टेस्ट ही नहीं है एंटीरियर 2/3. ओके, एंड decrease salivation. Vedant, decrease salivation because SMG and SLG दो glands में से secretion नहीं आ रहा है और anterior 2/3 का taste. Chorda tympani गया है. So number 5 पे facial muscles, number 4 पे facial muscles plus chorda tympani, that is decrease salivation and no taste of anterior 2/3 of tongue. Number 3 पे हाइपर एक्यूसिस होगा, बराबर है? हाइपर एक्यूसिस प्लस फेशियल मसल पाल्सी प्लस ये कॉर्डा टिम्पैनी का सारा इफेक्ट. नंबर 2 जो गेटर पेट्रोजल के अबव हुआ है उसमें क्या होगा? नो लैक्रिमेशन प्लस हाइपर एक्यूसिस प्लस
कॉर्डा टिम्पैनी का डैमेज प्लस फेशियल मसल्स का डैमेज, तो सब कुछ हो जाएगा। मतलब इतना कुछ हो जाएगा और रोने को भी नहीं आएगा। तुमको टेस्ट आ रहा है, तुम रो क्यों नहीं रहे? बिकॉज लैक्रिमेटरी फाइबर्स भी गए। तो हालत देखो कितना बेकार हो जाएगा। ओके, आप लोग को अगर लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, तो आप सोचो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, ओके, वो भी ऐसा सामने किताब भी नहीं है मेरे ना, मेरे पास इधर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं। अभी ये फाइबर्स कैसे जाते हैं टंग? So there are 2 pathways you have to remember in case of facial. 1, superior salivatory nucleus. वहां से फाइबर जाते हैं फेशियल नर्व, करेक्ट? नो, नर्वस इंटरमीडियस में जाएंगे फाइबर, सिक्रेटोमोटर फाइबर से इधर जाएंगे नर्वस इंटरमीडियस, फेशियल नर्व। देन हम लोग सबमैंडिबुलर को जा रहे हैं फाइबर्स। माधव, सबमैंडिबुलर को जा रहे हैं तो कौन से ब्रांच में जाएंगे? हाँ, बाजू की लड़की, उसका नाम क्या है लड़की का? आरवा। Which branch it will enter, beta? If it is going to submandibular gland, which branch it will enter? Chorda tympani. This chorda tympani joins lingual. This lingual is a branch of mandibular. It gives to submandibular ganglion. From there it goes to submandibular gland. So how fibers go to the gland? How they go to the gland? Superior salivatory nucleus, then nervous intermedius, then facial nerve, then chorda tympani. Chorda tympani joins lingual and submandibular ganglion. So submandibular ganglion tak these are fibers are called as preganglionic fibers. These fibers are called as Dr. गीते नाव काय तुझं पहिलं? Harshada. So these fibers from superior salivatory nucleus Harshada till the ganglion are called preganglionic fibers. In parasympathetics the preganglionic fibers are long, postganglionic are short. Sympathetics में उल्टा होता है, preganglionic are short, postganglionic are long. Okay, so these are preganglionic, then ganglions fiber. रेडी आहेत का ते? 1-2 मिनिटं झालं माझं होता. तुम्ही हे सेटअप करा तोपर्यंत तुझं चालू. हा, संपलं का? रोता काय वाटतं तुला, संपलं का? नहीं संपलं. अभी ये लास्ट पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, हाउ वी क्राई. Before I tell you how we cry, I want to tell you that it's easy to cry. सचिन सर, तुम्ही हे घ्या, सुरू करा. 3, 2, 1 बोला आणि इकडे कॉन्सन्ट्रेट करा आणि काळजी मध्ये येऊ नका तुम्ही. लॅपटॉप ला की दो मला 3, 2. So before I teach you how we cry, let me tell you it is easy to cry than to remember how we cry. Because after I teach this whole course, you will cry. I'm going non-stop. Fibers start from lacrimetry nucleus, then go to facial nerve. Directly facial nerve? Nahi. Nervous intermedius. Facial nerve. Facial nerve gives this branch called as greater petrosal nerve. Greater petrosal nerve.
A branch called as deep petrosal coming from the sympathetic plexus around the internal carotid artery joins it and it forms nerve to pterygoid canal. Nerve to pterygoid canal, this nerve goes to pterygopalatine fossa where it relays in pterygopalatine ganglion. These are the preganglionic fibers. The postganglionic fibers then go via maxillary nerve. Its zygomatic branch. Zygomatic branch gives zygomatico-temporal branch, which gives fibers to lacrimal nerve, a branch of ophthalmic nerve, and then it goes to lacrimal gland, and then we cry. Looking at this, we cry. Okay, but cry and don't. Nahin. Try, but so please keep on trying this. One day you will remember this. Okay, thank you. ये उस पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपको बार बार ये पढ़ना है। मैंने इसको एक शॉर्ट में भी अपलोड किया है। देर आर 4 पाथवेज लाइक दिस। ये 1-2 मैंने आपको सिखाया। इसके अलावा 2 और पाथवेज, एक पैरोटिड ग्लैंड को, एक आइरिस का, 4 पैरासिम्पैथेटिक पाथवेज इन हेड नेक। उसका 3 का एक मैंने शॉर्ट बनाया, वो भी मैं भेज देता हूँ। प्रिंस कुमार, मुझे एक हेलो भेजो वापस। थैंक यू।